लागेल ना, त्यासाठीच तर आम्हाला फुल स्क्रीन दिसायला पाहिजे ना आम्ही. अच्छा, ते आता माहित नाही सर, ते थोडंसं. चला ठीक आहे, करायला सुरू करायला सांगू. Okay, we'll go now. So good morning everyone. I am Prakash Kumbhare. On behalf Good morning, of sir. Dr. On behalf of Dr. Good morning, sir. CSIR-NEERI and staff of CSIR-NEERI, welcome you all to this significant event. Topic: igniting passion for science in young minds. The Jigsaw program organized in this regard will try to promote scientific temper among students through activity-based learning. Instead of focusing more on bookish knowledge, the Jigsaw program allows the students to carry out activities, observe, derive, and conclude. This will help students to innovate and explore. This scheme, conceptualized by our Prime Minister, tries to satisfy the curiosity of students, and Jigsaw is vital for nation building. So our expectation from the participating student is, after attending this program, they should think science, practice science, and do science for betterment of the country. Our science will help you to materialize your concepts and ideas. As part of the Jigsaw program, students and teachers of Kendriya Vidyalayas, Navodaya Vidyalayas, state government schools, and other schools, in particular, Navodaya Vidyalaya, Navigayo-Kheri, and Tata Parsi Girls High School and Junior College are participating in this program. The girl students are also participating from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Navigayo-Kheri, Nagpur, as part of the Vigyan Jyoti scheme recently launched by Department of Science and Technology, Government of India. Shri Vilas Chaudhary, Education Officer, Raman Science Center, has joined us as the resource person. Shri Chaudhary is physicist and involved in science popularization for the benefit of students and masses from last 25 years. He is also involved to supplement science education given in schools and colleges to foster the spirit of scientific inquiry and creativity among the students. His contributions in the field of science dissemination have been noteworthy. With this brief introduction, I request Vilas Chaudhary to guide the participating students through hand-on science activities. Sir, Chaudhary, sir, please. Thank you. Thank you, Kumbhare sir. And I welcome all the participants to this Jigsaw program. You all know that Raman Science Center is well known for conducting hands-on activities and workshops for the students. And I am very much happy that many of the girl students from Jawahar Navodaya Vidyalaya and Tata Parsi Girls High School, they are also there. Today's topic is fun with air pressure and vacuum. Air pressure and vacuum. So we'll, though it is hands-on activities program, for this hands-on activities you must have some material with you, but you may not have this material right now. So now what you will do is you will see all the experiments done by me. Mostly all the material which is available in and around you. With this material we can do these scientific experiments, and you can carry out these experiments afterwards. Now you can just watch what I do, and hope you will like all the experiments here. You all know that we are surrounded by air. All of us, everywhere there is air around us. And let me ask you one thing: how do we feel that there is a air? How can we say that there is a air around us? We cannot see that. But we can feel the air, because it exerts pressure and upon that's us. what defines its presence. Yes. Though we cannot see, we can feel that air when it flows from one place to the other. And one simple experiment I would like to perform here, that there is air pressure and how that air affects. I have got two papers here.
I have got two papers here. Can you see this? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, We Now, can. now if I drop these two papers, you will see that they just go like this and they reach at the same time. Now, with the same paper, one paper, एक पेपर को मैं इस तरह से क्रम्पल कर लेता हूं और अभी दोनों पेपर को एक साथ छोड़ता हूं। देखिए क्या होता है, जो पेपर क्रम्पल किया है वो जल्दी पहुंचता है और ये जो पेपर है ये तोलते डालते धीरे धीरे नीचे पहुंचता है। तो इसका कारण क्या होगा? सर बिकॉज जो पेपर है उसका जो एरिया है दैट इज फ्लैट, तो उस वजह से ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि लार्जर द एरिया लेसर द प्रेशर। बट जो पेपर है विच इज क्रम्बल, तो वो बहुत फोर्सफुली गिरा बिकॉज उसका जो एरिया है दैट इज स्मॉल। Yes, area covered by this paper, crumpled paper, is less, so it experiences less air resistance. You can say air resistance. There is a air here, so while going down, it resists the paper to go down, and that is why this area for this paper area is more, and that is why it experiences more resistance than this crumpled paper. One more idea or one more experiment we can do here. It is very simple. I have got a paper and a notebook. ठीक है? Now, if I leave these two papers, this paper and a notebook at the same time, notebook goes down first. It reaches ground first. Okay. Yes. Now, if I keep this paper below and leave this both the things at the same time, they reach the same time. Okay. Now, if I keep this paper up, नोटबुक के ऊपर अगर पेपर रखता हूं तो क्या होगा? That the notebook will Notebook fall will faster than the notebook will come faster than fast as possible as Very good. Now see, let us see what happens. आप में से बहुत से लोगों ने ये कहा कि नोटबुक पहले जाएगा और पेपर डोलते डोलते नीचे जाएगा। अब देखिए क्या होता है, पेपर और नोटबुक दोनों एक साथ नीचे गए। इसका मतलब क्या है? The air resistance experienced by this notebook was same for this paper also. So there was no extra resistance of air for this paper because it was just kept on this paper, this notebook. So air resistance was experienced by this notebook and not this paper. So paper is kept on this. So both of them will reach at the same time. Okay. This is how we can feel the air. There is air around it, and you all know that air also has weight, and that is how the air pressure, this term has come, air pressure, because there is an air column कम से कम 30 से 40 किलोमीटर तक ये हवा का कॉलम है, उसके ऊपर भी है लेकिन बहुत डेंसिटी बहुत कम है। तो इतनी सारी जो हवा है, आप सोच सकते हैं एक स्क्वायर इंच इस जगह पर इट इज सेड टू बी 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, इतना दबाव वहां पर होता है, दैट इज कॉल्ड atmospheric pressure. So how this atmospheric pressure, we don't feel that atmospheric pressure because all around us we have air, so that pressure nullifies when it acts from all the sides. उसके लिए एक और प्रयोग हम लोग यहाँ करते हैं, बहुत सुंदर सा प्रयोग है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे हम दिखाएंगे। उसके लिए
उसके लिए यहाँ एक पेपर मैंने लिया है, न्यूज़पेपर है, दिखाई दे रहा है आपको? Yes. न्यूज़पेपर है, तो आप सोच सकते हैं एक स्क्वायर इंच के ऊपर इतना प्रेशर होता है। अब ये पेपर है कितना बड़ा है, तो ये जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर भी एयर कॉलम है, उसके ऊपर प्रेशर है, लेकिन वो प्रेशर कैसे फील कर सकते हैं? देखिए एक लकड़ी है मेरे पास, काफी मोटी है। अब इस लकड़ी को मैं इसके नीचे रखता हूँ, दिखाई दे रहा है आपको सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, ये लकड़ी को मैंने इसके अंदर उसके नीचे रखा है, और इस पेपर को मैं थोड़ा सा स्प्रेड करता हूँ ताकि उसके नीचे की हवा निकल जाए। ओके, आवाज आपको आ रहा है? अभी देखिए यहाँ इस पेपर को मैंने फ्लैट कर दिया है और उसके नीचे ये पट्टी रखा है। अभी इस पट्टी को अगर मैं जर्क दूं, तो यहाँ ये जो प्रेशर की वजह से ये पेपर दबा हुआ है, ठीक है। अब ये प्रेशर इतना है कि अगर मैं इस पट्टी को जोर से आघात करता हूँ, इस पट्टी को यहाँ पर जोर से आघात करूंगा, देखिए क्या होता है। लकड़ी ऊपर उठ जाती है, पेपर फटता नहीं है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। दूसरा फिर से ये पेपर मैंने लिया है और इसके नीचे की हवा, थोड़ी भी हवा नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अभी ये पट्टी मैंने सिर्फ इसके अंदर रखी है नीचे। अभी इसके ऊपर जोर से मैं आघात करता हूं, ये देखिए ये पट्टी, दो टुकड़े हो गए पट्टी के, लेकिन पेपर बिल्कुल इंटैक्ट। So this is the power of air pressure. So this paper was experiencing air pressure, and because of that air pressure it was pressed, even though a very hard, this wooden stick I use, with a sudden jerk when I hit here, because of air pressure this paper could not be lifted up, instead पट्टी ब्रेक हो गई। तो इस तरह से you can say how atmospheric work on this size of paper. Okay, now one simple experiment we'll do. एक ग्लास टम्बलर मैंने लिया है, दिखाई दे रहा है सभी को? और इस ग्लास टम्बलर में मैं पानी भरता हूँ, इसमें अभी पानी भरा है मैंने, और एक कागज का टुकड़ा कागज का पीस लेता हूँ। ये जो कागज है, अब इस कागज के टुकड़े को मैं इसके ऊपर रखता हूँ, ठीक है, और इसको ऊपर उल्टा करता हूँ। कागज का टुकड़ा मैंने रखा है, अब आप देखिए क्या होता है। आधा ग्लास पानी से भरा है, इस पानी का इतना वजन होते हुए भी दैट पेपर इज नॉट फॉलिंग डाउन, ऐसा लगता है पेपर चिपक गया उसको। अब होता क्या है, देखिए पेपर को अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जब मैं इसको रिवर्स करता हूं तो पानी के वजन की वजह से पेपर बाहर की तरफ बल्ज होना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ ऐसा लगता है कि वो पेपर अंदर की तरफ बल्ज हो रहा है, अंदर की तरफ कॉन्केव हो रहा है।
That means some force is acting on it. That force is pushing that paper towards inside. So what is that force and how it works? Let me tell you one thing. Air pressure always works when there is a difference in air pressure. From high pressure, air flows from high pressure to low pressure. So this is how, though this experiment is very simple, explanation to this. Can somebody tell me about this? Because this is very simple experiment. I think in class 5 you must have done this. Can somebody tell what happens and how it happens? Okay, let us see. It was filled with glass. This glass tumbler was filled with water. When I put it here and try to do like this, जब पानी नीचे की ओर जाने की कोशिश करता है, because of gravity, water will try to go down, and because of that, air column यहाँ पर पानी के ऊपर जो air column है, that air column will expand because water will try to go down. As soon as it try to go down, air, this tumbler expands, and when air expands, air pressure reduces. And that is how there is a pressure difference between inside air and outside air. बाहर की जो हवा है और अंदर की जो हवा का प्रेशर है, दबाव है, उसमें डिफरेंस होता है. बाहर हवा का ज्यादा दबाव है, अंदर हवा का कम दबाव है. और इस वजह से होता यह है कि बाहर की हवा का दबाव पानी को बाहर आने नहीं देता है, पेपर को ऊपर की तरफ ढकेलने की कोशिश करता है. And that is how this air pressure works in this very simple experiment. Okay. Now this paper has got a tendency to turn inside because of air pressure. It was curved inside. If I use plastic one, what do you think? Will it work? No, sir. No, sir. No, sir. It will not. No, sir. Let us see. Because it is hard and it is not moldable by just like the paper. Okay. Let us see. Even though I have used a plastic one, it is working. And now, if you observe carefully, I can rotate this disc. Can you see this? I can rotate this disc, but it is not falling. See this? Once again, when water tries to go down, and because of surface tension, the property of water, surface tension, a film between this rim of a glass tumbler and this plastic one is formed. And that is how, when it tries to come down, air pressure in the glass again becomes low. And because when the air pressure inside this glass tumbler becomes low, outside pressure, which is outside air pressure, which is little higher than the inner one, that works, and that try to push this plastic plate towards inside, and that is how it holds this water column again. Understood? Okay. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now I have got one more disc which has got a hole at the center. Okay, can you see this hole? Now, Yes, sir. Yes, now, sir. what do you feel? Will it work now if I do the same? No, sir. The water will get through that No, hole. sir. The water Downwards. will not flow.
Water Because will get there is no that air, hole. water will not flow. Okay, let us see. Because now there is a way for air to go in so as to equal the atmospheric pressure. Outside, more atmospheric pressure will try to move the air towards inside the glass, and that is how now there is a hole, and that is how through that hole that air from outside will try to enter into that, and that is how it will allow water to fall down because of gravity. Understood? Okay. Now we'll move to the next one. Very simple experiment once again. There is a bottle. इसको मैं पानी से भरता हूं. ओके. बॉटल है जिसमें नीचे 2 छेद है. अब इस छेद को जब मैं चाहूंगा तब बंद कर सकता हूं और पानी को बंद कर सकता हूं और चालू भी कर सकता हूं. देखिए अभी. ओके. अब चालू बंद. चालू आ जाओ. बंद हो जा. तो इस तरह से हम अब देखिए आपको ऐसा लगता होगा कि मैं इसको प्रेस कर रहा हूं. इसको एक हैंडल है, इस हैंडल को सिर्फ पकड़ा है मैंने. अभी आपको लगता होगा इसको प्रेस करने से पानी गिरेगा, लेकिन इसको इस ढक्कन को भी अगर ऊपर से पकड़ लूं मैं, इसको तो प्रेस नहीं कर सकता मैं. पानी नीचे गिरना शुरू हो जाता है. बंद. तो जाहिर है एयर प्रेशर के कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो एयर प्रेशर से रिलेटेड ही ये एक्टिविटी है. किस तरह से कर सकते हैं इसको? किसी के दिमाग में ये आ रही चीज कि किस तरह से मैंने किया होगा ये? अभी देखिए सिंपल सी बात है, जो पहला प्रयोग मैंने दिखाया बिल्कुल उसी से रिलेटेड ये प्रयोग है. ये जो बोतल है, इस बोतल में यहाँ एक छेद किया है, ऊपर एक छेद है. जब छेद खुला है तो पानी नीचे गिरता है. अब छेद को मैं बंद कर दूं तो पानी बंद होता है. लेकिन आप ये देखिए कि पानी जब देखिए फिर से मैं छोड़ता हूं, पानी शुरू हो गया. अब जब मैं छेद को बंद करता हूं तो तुरंत पानी बंद नहीं होता है. बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट कंटिन्यूज टू फॉल. लेकिन यहां पर एंट्री फॉर एयर हैज ऑलरेडी स्टॉप्ड. नाउ आउटसाइड एयर कैन नॉट एंटर इन. पानी थोड़ी देर के लिए नीचे गिर रहा है. दैट मीन्स एयर इनसाइड दिस बॉटल हैज एक्सपांडेड. एक्सपांशन हुआ और जैसे ही एक्सपांशन हुआ एयर प्रेशर कम हुआ. फिर से वही बात, एयर प्रेशर अंदर कम है बाहर ज्यादा है. इस वजह से बाहर का जो ज्यादा दबाव है वो पानी को बाहर आने नहीं देता. Science So for very better simple government trick. of the See country. this. Our Can you science see this? will help you to materialize your concepts and ideas. As part of the Jigsaw program, students and teachers of Kendriya Vidyalayas, Navodaya अच्छे लगे Vidyalayas, सभी प्रयोग government आपको? schools, and other schools, in particular Yes, Navodaya yes, Vidyalaya, yes, Navodaya sir. Kheri, and Tata Park. चलो चलो अभी एक और बहुत ही सिंपल प्रयोग आपने सभी ने देखा है.
अच्छा, एक मोमबत्ती मैंने जलाई, सबको मालूम है मैं क्या करने जा रहा हूँ शायद, लेकिन जब हमें पता चलता है कि उसका सही रीजन क्या है, तब हमें और आनंद आता है, क्योंकि when you see the real reason behind that. Okay, कलर्ड वाटर मैंने यहाँ रखा है, आपको पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक ग्लास टम्बलर है, इस ग्लास टम्बलर को मैं इसके ऊपर रखता हूँ, दिखाई दे रहा है सभी को? Yes, sir. ओके, Yes, sir. क्या हुआ ये भी आप देख रहे हैं, क्या हुआ? What did you observe? That water is That water started coming water right. getting filled in the glass. I see the glass. Yes. Water has risen in the glass tumbler. पानी ग्लास के अंदर ऊपर की तरफ सक किया गया है, ठीक है। सक क्यों हुआ है? Because of air pressure. Air pressure. Because of the vacuum that is present in the glass. Because there is no air in glass. No Air air inside the glass. So because Because of the vacuum. heat, no, the air inside the glass now has low pressure, and as you said before that the air moves from high pressure to low pressure area. So now inside the glass there is low pressure, and because of that, the air is trying from the outside tries to come inside, and because of that, the water has risen up because the air is filling it. ओके 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 ओके। पहले जो प्रयोग हमने देखे उससे तो आपने ये अंदाजा लगा लिया है कि एयर प्रेशर कम है अंदर, इस वजह से बाहर का जो एयर प्रेशर है उसको पानी को दबाया और पानी के ग्लास के अंदर प्रवेश किया, ठीक है। Yes. लेकिन हमें ये सोचना है कि पानी का प्रेशर अंदर, हवा का प्रेशर अंदर कम हुआ कैसे? कैंडल, Sir, because of that candle, because of the heat, the air expands, and because of that, very good, very good. You don't have that logic that candle needs oxygen for burning. Yes, sir. yes, and now the supply of oxygen has cutted due to that And can't supply. glass, and because of that, that candle. पहले ऐसा तर्क दिया जाता था कि कैंडल को जलने की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जितनी अभी हमारे वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। 21% ऑक्सीजन है, तो आप देख सकते हैं कि 21% ऐसा लगता है कि बराबर 21% पानी ग्लास के अंदर प्रवेश कर चुका है, ऐसा लगता है, ठीक है ना। दैट इट कंफर्म्स दैट अर्लियर इट वाज लाइक दिस। पहले ये सोचा जाता था कि ये ऑक्सीजन के कंजम्पशन की वजह से उतनी मात्रा पानी की अंदर घुसती है, लेकिन इस प्रयोग को दूसरे पैरामीटर में अगर देखें, instead of one we can have 4 candles. पानी गिर गया ना।
दूसरी कैंडल रखो ना। ये रखो ना। ओके बस। Okay, now I have got 3 candles burning. Now, if I do the same experiment, let us say, अभी ग्लास वही है, ग्लास टम्बलर वही है, ऑक्सीजन की मात्रा भी उतनी ही होगी, लेकिन अभी जब मैं इसके ऊपर रखता हूं, पानी की जो मात्रा है वो कितनी है? देखिए, मेरे ख्याल से 3 गुना ज्यादा पानी अंदर आ चुका है। पहले जितनी पानी की क्वांटिटी ग्लास के टम्बलर के अंदर आई, उससे 3 गुना पानी अंदर आया है। ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन? पहले एक कैंडल थी, तो एक कैंडल की हीट कम थी, इस वजह से जो टम्बलर के अंदर की जो हवा है वो कम गर्म हुई और कम एक्सपांशन हुआ। लेकिन बाद में 3 कैंडल की जो ऊष्मा है, हीट है, वो बहुत ज्यादा थी। ज्यादा हीट होने की वजह से एक्सपांशन, पानी मतलब ग्लास टम्बलर के अंदर की जो हवा है वो ऑलरेडी एक्सपांड हो चुकी थी और ग्लास के बाहर निकल चुकी थी। ग्लास के बाहर अगर वो निकल चुकी थी, उसके बाद हमने इसके ऊपर रखा है जो ग्लास का टम्बलर, हुआ क्या? ऑलरेडी यहाँ पर एयर प्रेशर कम हुआ, 3 कैंडल की वजह से हीट ज्यादा थी, एक्सपांशन ज्यादा हुआ, एक्सपांशन ज्यादा होने की वजह से एयर प्रेशर और ज्यादा रिड्यूस हुआ, और रिड्यूस होने की वजह से बाहर से जो ज्यादा दबाव का ये था वो पानी को अंदर की तरफ, मतलब कम दबाव वाले क्षेत्र में जाने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, Yes. sir. अच्छा, एक प्रयोग हम देखते हैं यहाँ। यह कैंडल मैंने जलाई, दिखाई दे रही है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, अभी Yes, sir. ये एक ओपन एंडेड सिलेंडर है, दोनों तरफ ओपन एंडेड सिलेंडर है, और ये सिलेंडर जब मैं इसके ऊपर रखता हूं, देखिए क्या होता है। कैंडल बुझ गई, दो इट इज ओपन फ्रॉम दिस एंड, कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश। अभी इसको सिर्फ बहुत धीमे धीमे चल रही है, देखिए अभी सिर्फ ये जो पट्टी है, एक पट्टी है, और इस पट्टी को मैं सिर्फ यहां रखता हूं,
सिर्फ पट्टी को रखने से कैंडल फिर से जल उठी है, मतलब बहुत तेजी से जलने लगी, और सिर्फ जल नहीं रही बल्कि इस तरह से डोल रही है, मतलब इट इज लाइक डांसिंग। Once again, if I remove this, when I remove this, see that what is happening. बुझने की कगार पर है। फिर से जब मैं यहां करूंगा, फिर से जब मैंने पट्टी को रखा है, आप देख रहे हैं फिर से कैंडल जलने लगी है, जल उठी है। ऐसा होता जब ये ओपन एंडेड सिलेंडर है, जब कैंडल जल रही है, जलने की वजह से यहाँ की हवा गर्म हो रही है, हवा गर्म होने की वजह से हल्की होती है, हल्की होने की वजह से ऊपर जाती है, और जैसे ही एयर डेंसिटी कम होगी ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से मोमबत्ती की लौ भी बहुत कम हो जाएगी। जब मैं इस पट्टी को इसके अंदर रखता हूं, by putting this wooden strip, I am making two compartments. I am dividing this cylinder in two compartments, not equal size. एक हो सकता है बड़ा है, एक छोटा है। अब कैंडल की जो फ्लेम है, उस फ्लेम की साइड में जो कंपार्टमेंट है, it will be little hotter than the other. Okay? और जहां जिस कंपार्टमेंट में हॉट एयर है, what will happen? Air in that compartment will go up, and now there is a chance for replacing that hot air by a fresh air. So from one compartment hot air will come up, and from other compartment fresh air will go down. So fresh air will go down, come again. It will go down, it will come up. And that is how the flame was also, we feel that flame was also dancing. That is because of air flow from this side to this side. This is called a property of heat. It is convection. Convection current is formed, and because of this convection current, you saw this effect. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Yes, sir. Now we'll see other experiments. I got this air blower. This is an air blower. यहाँ से हवा बहुत तेजी से बाहर आएगी। देखिए होता क्या है।
मतलब यहाँ बहुत तेजी से जब हवा ऊपर आ रही थी, ऐसा नहीं हुआ, बहुत हल्की गेंद थी, ऐसा नहीं हुआ कि वो गेंद बहुत तेजी से बाहर की तरफ फेंकी गई, लेकिन एक जगह पर वहां वो हवा में तैरती हुई नजर आई है। इट इज बिकॉज जब नीचे से हवा का प्रेशर आया, उसकी वजह से तो वो तैरना नीचे से पुश हुआ उसको, तो पुश होने की वजह से थोड़ी देर ऊपर गई, लेकिन एक ऐसी जगह जहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। अब ये लो प्रेशर एरिया क्यों क्रिएट होता है, उसका कारण है जब हवा तेजी से बहती है, जब एयर फ्लोस वेरी फास्ट to its perpendicular direction, of the flow, there creates a low pressure area, and that low pressure area, in that low pressure area surrounded by high pressure area, that ball try to remain in that area of low pressure zone. So वहां पर जहां पर ये तैर रहा था, वहां पर लो प्रेशर एरिया जोन क्रिएट होता है, और इस वजह से बॉल वहां पर रहने की कोशिश करता है। अब ये जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है, जिसको मैंने बताया कि हवा जब तेजी से निकलती है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हवा का दबाव कम होता है, कम दबाव का क्षेत्र निर्माण होता है। वो एक प्रयोग है, उसके लिए उसका जो कंफर्मेशन है, उसको कैसे कंफर्म करेंगे कि हाउ इट वर्क्स। लेट अस सी अनदर एक्सपेरिमेंट। अभी उसके लिए मेरे पास क्या है, देखिए अभी देखिए फिर से फ्लोर है, यहां से हवा तेजी से ऊपर आएगी, यहां से हवा बहुत तेजी से ऊपर आएगी। यहाँ बहुत तेजी से ऊपर आई है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दैट, दिस इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ एयर। सो इफ आई डू इट लाइक दिस, ते अजून एकदा करा तो फार बोला त्याच्या that means air flow is in this direction and this is the perpendicular to that air flow. Okay, this pipe is perpendicular. Now if I keep anything here, now for example I'll put a ball here. Actual air flow is from this direction, it is in this direction, but due to Bernoulli's principle, to its perpendicular direction, there creates a low pressure area here, and that low pressure area will, through this area, this air is getting sucked. So along with that air, this ping pong ball which was kept here, it was also sucked and shooted like this. So this is how air pressure works, and this is how we can confirm the Bernoulli's principle. Okay. Okay. Now we'll have some more experiments.
इनको दिखना चाहिए ना क्या फोकस कर रहा है गिर जाएगा। Okay, now see, when we talk of air pressure, there is a term, it is called vacuum. Sometimes it is called partial vacuum. Vacuum means Vacuum is a space that is void of matter. It is absence of air. Vacuum is Vacuum something is in a which space which is void of matter. It means that air. it does not have any medium. There is not air in that. That is vacuum. vacuum means nothing. Vacuum means nothing, not even air. Okay, मतलब ऐसी जगह उसको वैक्यूम कहेंगे जहां पर हवा भी ना हो। मैटर की बात छोड़ दो, हवा भी ना हो उसको कहेंगे वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स लो प्रेशर, वेरी वेरी लो प्रेशर एरिया। ठीक है, अभी मेरे पास एक वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप मीन्स हवा निकालने की मशीन। ठीक है, अभी एयर प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है मैकडबर्ग हेमिस्फीयर। मैकडबर्ग हेमिस्फीयर मतलब इस तरह से दो हेमिस्फीयर को उस वैज्ञानिक ने ऐसे रखा और दो हेमिस्फीयर में से हवा निकाल दी, तो दोनों हेमिस्फीयर इतने टाइटली पैक हो गए कि यहाँ से 8 घोड़े और यहाँ से 8 घोड़े लगाने के बाद भी वो सेपरेट नहीं कर पाया। That experiment is famous by its name, that is Magdeburg hemisphere. Okay, so they cannot separate out. We have one bowl here. See, glass bowl. I have got a glass bowl here. Now, if I keep it just keep it on this table and try to remain. Now see, this meter shows that air is getting sucked. This meter shows इसके अंदर की हवा निकाल दी, इसके अंदर की हवा निकाल दी है। ओके, नाउ इट वाज जस्ट केप्ट ऑन दिस टेबल, सिर्फ यहाँ रखा हुआ था, लेकिन अभी उसको अगर उठाने की कोशिश करूंगा we cannot remove. I cannot remove this bowl from this top table top, क्योंकि इसके अंदर की हवा निकाल दी है। एयर प्रेशर बिल्कुल कम है, बाहर की जो हवा का दबाव है वो दबाव जहां पर ये जो रिंग है यहाँ पर उसके ऊपर प्रेशराइज कर दिया। सो बिकॉज ऑफ दैट एयर प्रेशर आई एम नॉट एबल टू सेपरेट इट आउट, आई कैनॉट रिमूव। सी दिस, and this is how that Magdeburg experiment worked. Magdeburg experiment. So once again I will put air into that. Let's see this. I am putting air into it. Now I can remove it very easily. आसानी से निकाल सकते। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे अभी। अभी एक बलून है, इस बलून को मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हवा भरी है। ठीक है, इस बलून के अंदर थोड़ी सी हवा भरी है और नॉट लगा दी है ताकि बाहर की हवा अंदर प्रवेश न करे। ठीक है, अभी बाहर की हवा अंदर जा नहीं रही। अभी इस बाउल के अंदर मैं इसको चिपका देता हूं। फिर से अपन वही करते हैं। अभी देखिए क्या हो रहा है। बलून
बलून की जो नाट है वो बंद बांध बांध के रखी थी मैंने, लेकिन विदाउट ब्लोइंग द बलून इट इज गेटिंग इन्फ्लेटेड। बलून इन्फ्लेट हुआ दिखाई दे रहा है आपको? बलून जो इतना सा था Yes. वो बलून काफी बड़ा हो गया। बलून कब बड़ा होगा? जब उसमें हवा फूकेंगे हम, एडिशनल एयर जब भरेंगे तब। लेकिन यहाँ विदाउट डूइंग एनीथिंग दैट बलून हैज गॉट इन्फ्लेटेड। ओके, नाउ सी, फिर से छोटा हो गया। कांच का बाउल है, सिर्फ अंदर रखा था उसको, हुआ क्या? ये क्लोज सिस्टम बन गया। ये क्लोज कंटेनर है। अब बलून के बाहर की हवा निकाल दी, मतलब बलून के बाहर एयर प्रेशर बिल्कुल कम हो गया, बहुत कम हो गया। तो एयर प्रेशर अभी कहाँ ज्यादा है? इस बलून के अंदर। तो बलून के अंदर जो ज्यादा एयर प्रेशर है वो कहाँ जाने की कोशिश करेगा? बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, मतलब एक्सपांड होगा। इस वजह से हमें ऐसा लगा कि उसमें कोई हवा भर रहा है और it was getting inflated. We saw that how it was inflated just because of difference in air pressure. I created partial vacuum around it, and because of that we saw that how balloon was expanded or balloon inflated. One more experiment. हाँ, सर ऐसा ब्लैक होल्स के अंदर भी होता है क्या? ब्लैक होल में बिकॉज तो मैंने गया नहीं, सुना है। मैं तो गया नहीं वहां। नो सर, बिकॉज मैंने सुना है कि कोई भी मैटर जाता है तो इट जस्ट गेट्स एक्सपांडेड एंड फिर वो एक मतलब एक छोटे से मैटर के अंदर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहां वहां ग्रेविटी होती है, बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी की वजह से। नॉट बिकॉज इट इज नॉट सराउंडेड बाय वैक्यूम, इट इज ऑलवेज इन वैक्यूम, एवरीथिंग इज इन वैक्यूम देयर। ओके, यस। Yes, sir. ओके, थैंक यू। okay, now we'll do one thing. अभी हम चाय बनाएंगे, चाय उबालेंगे। सबको चाय की तलब लगी है क्या? अभी मुझे तो लगी है। इसके पहले थोड़ा सा पानी पी लूं। इसके अंदर मैंने पानी मतलब थोड़ी सी गर्म चाय देखी है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। अब उसको उबालना है। देखिए गौर से अभी, दिखाई दिया आपको सभी को? यस Yes, yes, sir. यस सर। ये आपको दिखा दूं। इतना उबल गई चाय की नीचे आ गई।
चाय को बिना उष्मा दिए, विदाउट हीट, हाउ कैन अ टी बॉईल? You saw that how it was boiling. You know very well in kitchen why we Yes, use sir. pressure cooker. Why we use pressure cooker? So to boil to boil the food which is inside it. That can be done in a pot. Simple pot also No, we can sorry, boil. not to boil. Because it is very Fast. To cook it. Yes, we can cook it fast in Yeah. pressure cooker. How? cook. You know, what is the boiling point of water? 100 degrees Celsius. 100 Yes. degrees. 100 degrees Celsius. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री. समझो हम एक पतीले में पानी लेते हैं, उसको बॉईल करते हैं और उसको हीट देते रहते. अगर कितनी भी हीट दी तो क्या आप सोच सकते हैं कि पानी का टेम्परेचर 100 से ऊपर जाएगा? Yes. No, sir, उसके आगे अगर जाता है तो फिर it will So get maximum converted will into gas. be where the maximum the temperature will rise. यस, मतलब एक बार बॉईल होने के बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी का तापमान जा नहीं सकता, क्योंकि उस टेम्परेचर पे और नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रेशर जो अपना नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस प्रेशर पे पानी बॉईल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद जो भी हम हीट देंगे दैट इज यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर्स. ओके, Vapor. so it will not allow temperature of water to go beyond 100 degree centigrade. प्रेशर कुकर में हम लोग पानी के साथ रखते हैं ना सभी चीजें. So there water boils at 110 degree, 120 degree, 125 degree. क्योंकि boiling definition of boiling point is nothing but the when vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, या उसके ऊपर का जो सराउंडिंग है उसके साथ उसके इक्वल होता है वेपर प्रेशर, देन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग. अभी प्रेशर कुकर में हमने क्या किया, बॉइल कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया. प्रेशर बढ़ने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया. इस वजह से हमारी जो सब्जियां हैं वो सब्जियां 120 डिग्री टेम्परेचर पे बॉइल होती है, इस वजह से जल्दी पकती है. लेकिन यहां पर मैंने क्या किया, 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, ये जो चाय थी इसमें 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था. अगर 7 उसके ऊपर का जो एयर प्रेशर है उसको अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो वी फील दैट इट विल बॉइल एट दैट टेम्परेचर. जैसे माउंट एवरेस्ट में अगर आप जाते हैं, माउंट एवरेस्ट में आप बर्तन में सब्जी पकाने की कोशिश करो, कितना भी कोशिश करो, आपकी सब्जी पकेगी नहीं, क्योंकि वाटर बॉइल्स एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड एट माउंटेन्स at very high altitude. So there you need to have a pressure cooker. Without pressure cooker you cannot cook your food at higher mountain, higher altitude. Higher altitude में air pressure कम होता है, इस वजह से it boils at 70 to 80 degree centigrade. And that is what I did here. इसमें क्या किया मैंने, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाय रखी और उसके इर्द गिर्द इसके ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो रिड्यूस कर दिया. और रिड्यूस करने की वजह से क्या हुआ, it started boiling at that 70 degree centigrade. लेकिन टेम्परेचर बढ़ा नहीं, 70 डिग्री. ठीक है, समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What is it? इसमें नहीं कर सकते. हाँ, अरे यार ये तो देखता है.
It's ice cream time now. I have got a softie here. थोड़ी सी है, लेकिन I think there are so many participants. 33 participants. So I need 33 plates of ice cream, 33 cones of ice cream. So let us expand the size of this. See this. Now we can have a bowl full of ice cream. Let us see. See this. सबके मुंह में पानी आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है. Wow, ice cream. थोड़ा सा था मेरे पास, लेकिन मेरे ख्याल से पूरा बाउल भर जाएगा अभी देर बाद. इतने खुश हो गए सभी लोग, सभी को आइसक्रीम दूंगा, लेकिन वो भी डिजिटली यहाँ से. Okay, so let us see this. What happened? It has again reduced. So how I could do it? Let me tell you, it was not ice cream. It was a foam shaving cream. Foam वाली जो shaving cream थी. Foam मतलब क्या है? उसमें there were air packets. There were so many air packets were there. Yes, this was that. So you get foam through this. So there was air packets or small source of bubbles. There were so many bubbles. तो एक बलून आपने देखा, एक बलून इतना बड़ा हुआ था, तो इतने सारे सोप बबल्स थे या एयर पैकेट्स थे. तो जब उसके बाहर की हवा कम हो गई, एयर प्रेशर रिड्यूस किया, तो नेचुरली व्हाट विल हैपन? दोस एयर बबल्स स्टार्टेड एक्सपांडिंग. So this is how we got 33 amount of cones of ice cream. लगता है आपको आइसक्रीम बहुत अच्छी पसंद आई है सभी को. अच्छी लगी आइसक्रीम? अच्छे लगे सभी प्रयोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक आखिरी प्रयोग अभी हम लोग करते हैं. आखिरी प्रयोग. उसके लिए एक वैक्यूम पंप है मेरे पास. घर का जो वैक्यूम क्लीनर है, ये जो वैक्यूम क्लीनर है, उस वैक्यूम क्लीनर को मैंने यूज किया है. और वैक्यूम क्लीनर को यूज ऐसे किया है कि यहाँ एक पाइप है, एक अरेंजमेंट बनाई है. यहाँ एक पाइप है, एक टी लगाई है, और यहाँ दूसरा पाइप है. मतलब यहाँ से जब मैं चालू करता हूँ तो ये कपड़ा आगे कपड़ा लेके भी तो मतलब क्या है, यहाँ पर ये सक कर रहा है, वैक्यूम क्लीनर है. वैक्यूम क्लीनर की वजह से क्या हुआ, ये पाइप उसको अटैच किया. ठीक है, अब यहाँ से वो सक कर रहा है. अब इस सकिंग को मैंने गन के रूप में इस्तेमाल करना है. गन. अब गन कैसे काम करेगी देखो. अब ये मेरी बुलेट है. ठीक है, अब इस बुलेट को जब मैं सिर्फ यहाँ रखता हूँ तो आप देखेंगे
enjoyed this vacuum gun also. So all these experiments were specially done for you, and I must thank all of you to join this workshop. Hope you all are happy to watch all these experiments. Okay. Sure, sir. Yes, sir. Kumare sir. Thank you, sir. यस Thank you, सर, sir. थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा बताया, और जो यंग माइंड्स है उनको इग्नाइट करने के लिए, जो उनका पैशन है साइंस का, उसको एक इग्नाइट करने के लिए, एक डायरेक्शन देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। स्टूडेंट्स, मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि हम मैक्सिमम या 3 या 5 ऐसे क्वेश्चंस ले सकते हैं। सो इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क टू चौधरी सर। इस सेशन में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वैक्यूम में कोई डाउट्स है आपके, कुछ पूछना है सर से, पूछ सकते हैं आप प्लीज। So I have one question. It is not related to these activities, but yes, it is related to the vacuum. So whenever we get to the space, so I have heard that to the space, so it is just made a match between the atmosphere and what is outside on the inside. Like the space suit जो होता है वहाँ पे पहले हवा भरी जाती है and then उसे suck किया जाता है, तो अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। सो फिर वो जो बाहर का एंड अंदर का जो रहता है एटमॉस्फेयर, सर कैन यू हियर? सॉरी एक्चुअली वॉइस इज नॉट क्लियर। Sir, वॉइस नॉट। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन बिकॉज वॉइस वी कुड नॉट हियर यू प्रॉपर्ली। now can you hear me? It is local, maybe there local connectivity. Speak. Yeah. Okay. So my question is that the space, the space of first air is filled and then it is sucked on the vacuum. So why is it? Actually, please, actually, we are not able to hear you. So, who is speaking first? Kunj, Vaez, you please speak first. What we are asking? Others, please keep on mute. Here. Please. So my question is that in the spaces, a vacuum is created so that it can match with the other atmosphere. I heard that if the space नहीं आ रही आवाज। this Actually, disturbance is there. We could not hear you because somewhere the voice is coming somewhere because it is clashing, overlapping. So, please from JTS, Tata Parsi School, this base. बेटा आप बोलिए पहले। हाँ, yes, sorry. So in a थोड़ा माइक पास में लेके बोलिए। yes. So in a space suit, the vacuum is created so that it would match with the outer environment. So I heard that if this vacuum gets destroyed, so there is an immediate death of the astronaut. So why is it so? What happens? सर आप सुन पाए चौधरी सर सवाल? दूसरा चौधरी सर सुन पाए हैं सवाल? इनकी आवाज नहीं आ रही ना, दूसरा कोई है तो दूसरा पूछिए। आवाज नहीं आ रही बेटा। हाँ, कोई दूसरे कौन पूछना चाहता है पूछिए, बिकॉज उनका मुझे लगता है पुअर कनेक्टिविटी दिख रही है। प्लीज पूछिए। excuse me, sir. May I ask? हाँ, yes, please go ahead. Dhanashri, you ask, please. Thank you, sir. Thank you, sir. So my doubt is that, so how the vacuum sucks? How the vacuum? What is the property of vacuum that it sucks the things? I want to just clarify that idea. See, in the very beginning, I told you that air pressure works when there is a difference in air pressure. So when there is a high pressure, it will flow towards low pressure area. Okay. So vacuum is nothing but very low pressure area, and that is how
when it is a very low pressure area, the outside high pressure air will rush towards the low pressure area, and that is how we get the suction effect because of vacuum cleaner or vacuum pump. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Divya, you ask now, please. Yes, sir. Excuse me, sir. I wanted to ask that how that the machine works, that it is creating the vacuum then. There is a mechanism of piston. It moves up to and fro. जैसे ही सक करता है और एक जगह से हवा रिलीज करता है, दूसरी जगह से वो सक करते जाता है. एक तरफ हवा रिलीज करता है, दूसरी तरफ सक करते जाता है. This is how air is removed from that area and it continues to remove the air from that area, thereby creating vacuum. Thank you, sir. Paridhi, you can ask your question. Thank you, sir. My doubt is that the atmospheric pressure above the sea level and that of below sea level is different. So, how does the biotech life under the ocean deals with the impact of atmospheric pressure there? Sea level, deep sea. Deep sea, पानी के अंदर बोल रहे हैं आप? Yes, sir. पानी के अंदर हवा के प्रेशर की नहीं, लेकिन पानी के प्रेशर की ज्यादा चिंता होती है, क्योंकि पानी के प्रेशर जैसे जैसे नीचे जाते हैं, पानी का डेप्थ जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे वहां का प्रेशर बढ़ता जाता है, और इसी की वजह से ज्यादा डेप्थ में जब जाते हैं तो उनके यहाँ अलग से उनको कपड़े पहनने पड़ते हैं, या फिर उनके पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो यूज किया जाता है. Thank you, sir. Anshita, you can ask your question. Anshita. Okay, I think she's Thank you, sir. So I want to ask that how the air blower works, means how it sucks the air and how it blows the air from the another pipe. Can you please repeat? So I want to ask that how the air blower works, means how it sucks the air from one pipe and how it blows from another pipe. How it goes in another pipe. This one you said. How the air blower sucks. Yes, sir. Air blower sucks. ये है ना? नहीं, इसी में पूछ रही है, एक पाइप से दूसरे पाइप में कैसे. अभी देखिए यहाँ पर सक्शन हो रहा है. This is attached to vacuum cleaner, so it is getting sucked here. Okay, ये जो पाइप है ये जुड़ा हुआ है यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये पाइप जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा ये जो पाइप ओपनिंग रखा है, यहाँ पर एक ओपनिंग रखा है, और ये जो फ्लैप रखी है सिर्फ, इट वर्क्स एज अ वाल्व. बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है बेटा आपने, आपको बहुत अच्छा सवाल मन में आया. अब ये वाल्व जो है ना, ये वाल्व काम करता है जब वैक्यूम जब क्रिएट होता है तब ये बंद हो जाता है. बंद होता है, बंद होने की वजह से यहाँ जो वाल्व है ये बंद होता है. अब बंद होने की वजह से ये यहाँ से जो सक होता है वो यहाँ से सक होता है. अब यहाँ से सक होने की वजह से अब ये जो गन है, ये गन कैसे काम करती है, बहुत तेजी से ये जो गेंद है, ये गेंद जब यहाँ तेजी से सक करती है तो देयर इज अ वे आउट. न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? If a body is in a motion, it continues to be in a motion unless and until there is no external force. So यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तक आते आते बहुत तेजी से आ गई वो,
Now there is an opening here to go out. So according to Newton's first law, it was thrown very fast from this opening. Okay, as soon as it is thrown, ये जो wall है, ये wall बंद हो जाता है इस तरह से. This is how this vacuum gun works. Understood, beta? Yes, sir. Thank you so much, sir. Okay, okay. Kunj, you can ask your question. I think she has asked first, but she is offline. So I have texted that message in the messaging wall because my voice is breaking, so you may read it from there. If How to go to chat box? I will have to go there. yes, sir, I have texted over there. Pallavi, can you read her question? Kunj's question. She is telling that she has placed in her chat box. Please. अच्छा, स्पेस सूट के बारे में. देखो, नॉर्मली हम जब अर्थ पे हैं तो अर्थ पे हमारी जो कैपिलरीज है या ब्लड वेसल्स है वो काम करती है अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड. ओके, इवन आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आप जैसे माउंटेन्स पे जाते हैं तो बहुत आपने सुना होगा कि नाक की जो पेशियां है वो रप्चर हो जाती है क्योंकि बाहर की हवा का दबाव कम है और जो पेशियों के अंदर उस बाहर की हवा का दबाव कम होने की वजह से पेशियां रप्चर होने लगती है और ब्लड आने लगता है. और टू मेंटेन दिस प्रेशर आउटसाइड आवर बॉडी स्पेशल स्पेस सूट्स आर मेड टू सर्वाइव. मतलब हमारी जो पेशियां है वो रप्चर नहीं होनी चाहिए, उस वजह से वो स्पेस सूट बनाए जाते हैं. और जाहिर है अगर उसमें अगर पंक्चर होता है देन within no time your all the cells or blood vessels will be ruptured and it will be all bloody. Means पूरा ब्लड आपका बाहर है, इस तरह से रप्चर हो जाएगी सभी सेल्स. So I think now. Thank you, sir. Thank you. So thank you all, and now here just we are going to conclude the program now because I think it's all because we are just exceeding our time. So Chaudhary sir, thanks for igniting young minds with the joy of science. I'm sure that the demonstration have been able to excite the young minds with science. Your guidance has been motivating and rewarding for them. Seeing science in action raises more questions in young minds and they start to go deeper and want to know more. So we may now we have already taken questions. Thank you. Now Thank actually you because it was a live session. And please sir, what did you say? Thank you, NEERI, for inviting me for this session. Thank you, sir. It's always a pleasure for us. So now, moving to the concluding session, we are highly honored that Sri Vilas Chaudhary is amongst us today. The director and staff of CSIR-NEERI are indeed grateful to Sri Vilas Chaudhary ji for graciously and readily accepting our invitation. It will be a great pleasure for us to listen him again in our future events because our future events are always there at Jigsaw. So now, due to this COVID-19, we are organizing this online. I think very shortly it will be physical presence will be there of students and teachers. We are also planning to organize one teachers workshop also for entire Nagpur. So we'll see very shortly that how can we organize that with in collaboration with Raman Science Center and other scientific institutes. So I thank all the students, teachers, and principals of various schools for participation in this program. Looking forward to long-term association with them. I sincerely thank our director, Dr. Aturvadya, our IT team, and my entire Jigsaw team for kind support. I also thank those who are associated with this event. So I conclude here this program, and thanks to one and all, particularly teachers and students. Without your support and cooperation, this program would not have been successful. Thank you, Chaudhary Sahab once again. Your presence is always a pleasure for us and very motivating, inspiring presence is there.
So thank you teachers, thank you students, thank you all viewers, thank you one and all. One more question in the chat box. Pallavi, can you read? Okay, man. This yes, you will take. Because students are supreme. Yes, definitely. Pallavi? Ah, Waves. Wave curves in the sea. Where? Waves in the sea or where? Waves in where? Waves in sea or where? I don't think there is a relevance between these waves and atmospheric pressure. What type of waves? There are different kinds of wave: light waves, electromagnetic waves, sound waves. so is the student is there, so she can clarify what actually she wanted to ask. Sea wave, sea wave. Sea wave is nothing to do with atmospheric pressure, but when air blows from sea to the landform, and because of that, these waves are formed on the water surface. Okay. Excuse me, sir. एयर प्रेशर के साथ ऐसा कोई संबंध उसका नहीं हो सकता है. सिर्फ एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से एयर ब्लो करती है और एयर ब्लो की वजह से वो पानी का बहाव भी पानी के मतलब अर्थ की तरफ आना शुरू होता है. सर नवोदय विद्यालय से एक क्वेश्चन हाथ रेज किया है, हैंड रेज. प्लीज पूछिए. नवोदय विद्यालय अशोक कुमार सर, प्लीज योर स्टूडेंट्स प्लीज. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है. आपका वो माइक जो है ना वो म्यूट है, देखिए प्लीज. नवोदय विद्यालय. हाँ, yes, now we can hear you. Yes. Please. How matter can travel in this? मैटर की माइक्रोवेव. लाइट वेव. How light? हाँ. I don't know. Because light is a form of energy. Okay, it does not require medium like sound. When it is sound waves requires medium, and light does not require any medium to travel because it's a energy in the form of photon. And when that energy moves from one to the other place, it doesn't require any medium. So even if it is vacuum, it can travel. Thank you, sir. हाँ, please go ahead. हाँ. Who said nitrogen is not inhaled?
ओनली ऑक्सीजन वी इनहेल ऐसा नहीं है। हवा तो हम इनहेल करते ही है, लेकिन हमारी बॉडी में इस तरह के सिस्टम है कि वो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर सकता है, बाकी गैसेस को नहीं। तो ऑक्सीजन को हम ऐसा बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हवा के साथ साथ सभी गैसेस हम अंदर लेते हैं, बट ऑक्सीजन इज यूजफुल एंड आवर बॉडी इज बिल्ट टू एब्सॉर्ब ओनली ऑक्सीजन। ओके, सो नाइट्रोजन आल्सो वी इनहेल, but it is of no use for us. ठीक है, वो लिमिट से बाहर होगा तो हार्मफुल हो सकता है, बिल्कुल नाइट्रोजन। इसीलिए वो पोल्यूशन वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब फिर से बोलेंगे, मैं शायद बीच में भूल गया। very simple, it is barometer. Barometer. This type of answers you will find in books and even when you Google. Did you get your answer? Sir, I want to ask that what is how is the structure of the barometer? Yeah, How I can it works? see. I don't have that barometer here to show you. Okay, so you can study that through your textbook or any video. Okay, it can be explained if you have that barometer here, and it can be explained by showing that. Okay. This is that. Wait. Yes, sir. So I think there are no questions now. So we can. So now, Excuse me, sir. can we conclude with your permission, students and teachers? Yes. Should we conclude now? Excuse me, sir. Because you will be Sir, coming now I shortly have to a our NEERI last also. question. Please. Yes, ma'am. Dhanashree, please. Thank you, sir. Sorry, but I have a last question. That is, when you were showing us the experiment, that time network congestion was there from my side. So I didn't understand that how the things expand themselves in vacuum. Like you gave us the example of balloon. The balloon expands when the vacuum was there. Even there was a knot. So, sir, how it expands? See, when I kept a balloon inside the glass bowl, okay, in balloon there was air, and I removed air, surrounding air of the balloon, okay. बलून Yes. के आजू बाजू की हवा निकाल दी, दैट मीन्स बलून के बाहर का एयर प्रेशर कम हुआ। वैक्यूम क्रिएट करना मतलब क्या हुआ? टू रिड्यूस द एयर प्रेशर ड्रास्टिकली, एंड व्हेन आई रिमूव द एयर प्रेशर, initially I told you air pressure works when there is a difference in air pressure. So from high pressure to low pressure it tries to move. So balloon के अंदर हवा है, balloon के बाहर हवा नहीं है, that means air pressure outside the balloon is very low. So air pressure inside the balloon, because it is higher, it will try to move towards low pressure area, and that is how we saw that balloon got expanded. और इसी वजह से balloon
लो प्रेशर एरिया की तरफ जब जाने की कोशिश कर रहा था तो एक्सपांशन हो रहा था, इस वजह से बलून का एक्सपांशन हमें दिखाई दिया। और जैसे बलून का एक्सपांशन हुआ उसी तरफ जो बबल्स है, जो हमने देखे शेविंग क्रीम के जो एयर पैकेट्स थे, एयर पैकेट्स में भी उसी तरह से एक्सपांशन हुआ जब बाहर की हवा का दबाव कम हुआ। Okay, sir. Thank you so much, sir. Okay, now thank you, sir. Now we will conclude here because there will be, I think, questions because students are very curious and there will be many questions because in their minds. But we are very shortly, we will give you opportunity to come to NEERI, and I think a lot of questions and lot of your curiosities, lot of experiments, a lot of science projects that we can help you how to guide and how to advise can be taken from our scientists from a science center and with other institutes also. So thank you very much. Here we conclude this program. Thank you one and all. Thank you very much. Thank you, So sir. you can please log off. Yes, thank you, sir. Thank you, Chaudhary, sir. Thank you.